So before moving towards the technical subject, can you just tell me about yourself? Sir, my name is Govind Singh. I belong to Kannauj, Uttar Pradesh. My father is an Indian Army officer and my mother is a homemaker. I have completed my graduation this year from BIT Jhansi. I have a strong foundation in programming with skills in Java and SQL. I have been interested in DBMS, operating system, computer network, data structure and algorithm. Beyond Okay. academics, I have also interest in gardening, javelin throw, chess, and watching movies. The ultimate the ultimate aim is to be part of an organization which helps in advancing national defense system. Okay. So now, can you just tell me, like, is there any experience you have? No, sir. I have graduated this year, so I have no. Okay. In the final year, have you done your any project? What's your minor and major project? Sir, my major project was related to Python. It is basically related to digital security. Digital security. Okay. So what type of security you provide? Sir, basically, sir, it creates password and stored them in encrypted way. All things were operating in offline mode. So what is the good thing about the password you are creating? Is it error free or no one can hack that password? Yes, sir, it is very strong password related to common password. How? Which algorithm you have to use in that? Sir, I have used symmetric key encryption like substitution cipher algorithm. What is that? Can you explain that one? Sir, substitution cipher algorithm in this we replace our text with a key. सर इसमें क्या होता है सर कोई भी टेक्स्ट दिया है सर उसको हम जो कोई भी की दिया है उतना उससे सेव रिप्लेस करते हैं जैसे ABCD दिया है तो मैं सर अब सपोज हमने की हमारी 4 टाइम्स है तो हम A को 4 टाइम्स ज्यादा रिप्लेस करेंगे So ये तो स्टैटिक हो गया ना? यस सर तो आप इसको तो हम हैक कर सकते हैं क्योंकि आपने फिक्स चीजें रखी हैं. सर इसमें सॉल्टिंग भी यूज किया हुआ है जो भी सर पासवर्ड का जो हैश बनेगा सर उस पे हमने इंक्रिप्शन भी परफॉर्म किया है हैशिंग सॉल्टिंग क्या होती है? सर हैशिंग में ये कोई भी सर जो भी टेक्स्ट दिया है सर एक फंक्शन होता है सर उसको यानी कि एक टेक्स्ट दूसरे फॉर्मेट में कन्वर्ट कर देता है सर फॉर्मेट में कैसे? किसी सर फंक्शन के द्वारा करता होगा. आपने वो फंक्शन क्या यूज किया था? सर अभी मुझे याद नहीं आ रहा सर प्रोजेक्ट के बारे में अभी सही से तैयार नहीं किया मैंने Okay, so please prepare your project, minor as well as major, and how you can improve more in that your project. Is it the realistic project you are made, or is it the just a, like I can say just a project? Fine. ओके So please go through all those stuff. Fine. So can you just define the network based on their distance or the geographical locations? नेटवर्क बेस्ड On ऑन the basis of the reasons, like we know that we have some network like PAN, MAN, LAN, WAN. So can you just define the distance as well as what is that particular network? सर लोकल फर्स्ट वन इज लोकल एरिया नेटवर्क सर Okay. local area the network that is inside 1 to about 1 to 10 kilometers are considered to be local area network. Okay. Yes, sir. And metropolitan local area network. It is a wider range of local area network. Okay. That as far as distance is concerned, I think it is. I do not know exact distance, sir. And the wide area network is a broader concept of metropolitan area network. Okay. So how we connect to different networks? Sir, we can connect to networks with the help of IP addresses, with the help With devices, I'm talking about the devices.
So we can connect two devices with the help of routers. Okay, what is a router? What is the working of router? The router is a network layer device that is used to perform communication between two devices using IP addresses. Okay. So how router get to know that I have to transfer the data which I received to a particular destination or particular network? How it has able to decide this in detail? Sir, every router has a routing table. Routing table. What Yes, is sir. the initial value of routing table? Initial value of routing table. I don't know initial value, sir. सर, अगर जो डेटा का Which algorithm is used by the routing table to find out the distances? the distance vector routing. Distance vector routing. What is distance vector routing? What is the algorithm of that? Distance vector routing is a dynamic algorithm in which What do you mean by dynamic? dynamic means, sir, it keeps on changing based on the topology of the system. Okay. सर इसमें क्या होता है सर, जो every router has the information about its neighboring router and it also knows the distance between the How it knows? सर इसमें क्या होता है, every router sets its distance vector with a neighboring router or based upon that Yeah, that is the main point. Very good. Yes, please continue. yes, sir, every router has the information of the neighboring router and it shares distance vector to the neighboring router, and based upon that each router keeps on updating its routing table. Okay. So they get to know the how where to transfer and how much hope count What will. is Discovery algorithm? The Dijkstra algorithm. Yes. The Dijkstra algorithm is a single source shortest path algorithm. It is used to find the distance from one source to the another in the minimum time. The minimum cost, not the minimum time. Okay. Minimum cost. Okay, fine. So, have you heard about the term VPN? Yes, sir. Virtual private network. What is that? Sir, virtual private network is a secured and encrypted type of network which is used to establish connection over the public network. Very good. Very good. So, what is the use of that one? Sir, it is used to provide privacy and confidentiality over the public network. What do you mean by confidentiality? Confidentiality means that only the authorized user should get access to the data. Okay. So you know that we divide our IPs into different form like public IP, private IP. Can you define what is the use of public and private IPs? The public IPs are basically used by the basic users, and private. Okay. And private. No, sir. I think public IPs are used by the government, like defense system. Private IPs are used by the local system. प्राइवेट Right. पब्लिक सर इसको ऐसे भी बता सकते हैं, प्राइवेट सर यानी कि किसी भी लोकल एरिया नेटवर्क में किसी भी एरिया में वो पर्टिकुलर होती हैं, वो दूसरे में भी प्रेजेंट हो सकती हैं. Right. So what is the difference between HTTP and HTTPS? सर What is their port number also? सर HTTP port number sub is 80, and the port number of HTTPS is I think 552, sir. Not 443, I think. 443, yes, sir. Sir, in Yes. HTTPS we use secure socket layer to provide encryption over the data transmission. But in Fine. HTTPS we do not have this facility. And Okay. HTTPS is more secured than HTTPS. Fine. So can you just tell me like what is the difference between TCP and UDP? The TCP is a connection oriented protocol. While Okay.
चलो, while UDP is connectionless protocol, So UDP UDP is unreliable protocol, while TCP is a reliable protocol. why you can say that it is unreliable? Because, sir, in TCP we have the facilities of acknowledgement and retransmission policies, which makes it reliable. While Very good. while in UDP we do not have such facility where we can acknowledge that we have received the data or not. Okay, so is there checksum available in UDP? Yes, sir, checksum is available. Okay, so how we can calculate the checksum? What is the method of checksum? सर चेकसम में सर हम सारी बिट को यानी पर्टिकुलर यानी 8 8 बिट में मान लिया किसी भी पर्टिकुलर बिट में किया सर, उनको ऐड करते हैं, लास्ट जो एडिशन आया सर उसका वंस कंप्लीमेंट फॉर्म करते हैं, वही सर चेकसम होता है जो Very good, very good. What do you mean by jitter? जिटर। सर सॉरी सर, आई डोंट। जिटर आपने सुना होगा टर्म, डिले रहता है कुछ ये, जिटर। पैकेट डिले में का। यस सर, क्या होता है सर? हेलो, यस सर। हेलो आइडिया है कुछ जिटर के बारे में? सर, सुना है सर, बट रिकॉल नहीं कर पा रहा सर। सुना तो है सर जिटर। लाइक जब डिफरेंट डिफरेंट पैकेट्स का डिले अलग अलग होता रहता है नेटवर्क की वजह से। फाइन, कुछ डिले से रिलेटेड है बच्चे, आप देखना। ओके सर। ठीक है, और फाइन, अगर मैं फीडबैक की बात करूं तो काफी बेटर लग रहा है गोविंद अभी आपका। ठीक है, शायद आपने रिवाइज किया होगा, आई थिंक, मुझे लगता है चीजों को। पिगी बैकिंग बता सकते हैं क्या है? ये सर सेंडिंग डेटा विथ एक्नॉलेजमेंट इज नोन एज पिगी बैकिंग। सेंडिंग डेटा, हु कैन सेंड द डेटा विद एक्नॉलेजमेंट? रिसीवर और सेंडर और सर बोथ? सर बहुत कंसर्न एक्नॉलेजमेंट सर, रिसीवर। Very good. Then we can say that their packet size will be high. यस सर, सॉरी सर। So if we are sending data as well as the acknowledgement, so we can say that their packet size or the overall data size is somewhat more. Yes, yes, it's somewhat more because acknowledgement is only of one. No, अगर if there is continuous अगर सर दोनों ही एक साथ भेज रहे हैं तो यानी कि वो एक तरीके से मैंने भेजा, सेंडर ने रिसीवर को भेजा, रिसीवर ने भी भेजा, तो वो एक तरीके से एक्नॉलेजमेंट ही कंसीडर किया जाता है। What तो is the full form of Wi-Fi? सर वायरलेस फिडिलिटी। वेरी गुड। सो ठीक है गोविंद, मैं बात करूं आपके इम्प्रूवमेंट की, तो लास्ट स्नैप से तो आज बहुत अच्छा इम्प्रूवमेंट हो रहा है, आप अच्छे से डिलीवर कर पा रहे हैं। इवन आपको टॉपिक्स का पता भी है, आइडिया भी है। तो अब आप एक बार थोड़ा सा सिक्योरिटी पार्ट का और देख लीजिए, प्लस लाइनेक्स की कुछ कमांड्स। ठीक है, इस पे वर्क करिए, एज वेल एज आप ऑपरेटिंग सिस्टम या आपको लगता है एल्गोरिथम या डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम पैरेलली वो सब्जेक्ट तैयार कर लीजिए, क्योंकि I think now you are a bit comfortable with the computer network. You know the basic terminologies and all this stuff. Okay. Parallelly, कभी टाइम मिले तो इसको दो दो एक एक घंटा एक बार फिर से रिवाइज करते रहना, बेसिक टर्मिनोलॉजीज को। Like what is the difference between throughput and like bandwidth? What is the use of bandwidth in finding the throughput? What is efficiency? तो ये basic what is signal to noise ratio fine. तो इन सब चीजों को थोड़ा ध्यान से देखते रहना। ठीक है, कंट्रोल फ्लो, एरर फ्लो पॉलिसीज क्या है, कैसे वर्क करती है, तो इन चीजों को एक बार आप देख लो। इतना ज्यादा पूछते नहीं है, बट स्टिल एक बार आप देख लेना। ठीक है, ओके सर। हाँ, इनको पैरेलल में करते रहो, प्लस अभी नया सब्जेक्ट स्टार्ट कर दो एक बार के लिए, क्योंकि हमें एटलीस्ट 3 to 4 सब्जेक्ट करने हैं। ठीक है, और थोड़ा सा कॉन्फिडेंस रखो, आपको चीजें आ रही है तो थोड़ा फेस एक्सप्रेशन अच्छे से दो, लाइक आपको ऐसे लग रहा है कि बहुत डरे हुए बैठे हो। ठीक है, ऐसा नहीं, हाँ अभी ठीक है ना? अभी ठीक है ऐसे हैं, ऐसा करो बच्चे, काफी इंप्रूवमेंट है, डोंट वरी। ठीक है, अभी टाइम है हमारे पास, हो जाएगा। तो आप कल या परसों, कल ही दीजिए इवन, क्योंकि हमारे पास 15 to 20 डेज ही हैं। तो रेगुलर स्नैप दीजिए एट दी आफ्टर दी 6 to 7 स्नैप ना, आपको पता लग जाएगा कि कितना कंफर्टेबल हो आप। सर ठीक इसका है, सर कंप्यूटर नेटवर्क का स्नैप फिर से दे सकते हैं ना सर दोबारा? हाँ किसी का भी दीजिए, पर मैं ये कहूंगा कि कंप्यूटर नेटवर्क का एक बार अभी आपको बेसिक नॉलेज है, जी इसीलिए छोड़ दो एक बार इसे, तो पैरेलल में खुद से पढ़ते रहो। हम 3 या 4 दिन के बाद फिर से एक बार नेटवर्किंग का लेंगे, और तब मैं आपसे अच्छे क्वेश्चन भी पूछूंगा। आज मैंने बेसिक से स्टार्ट किया है। ठीक है, सर। फाइन। ओके। ठीक है बच्चे, कुछ और?
सर बाकी सर अभी सर डेटा स्ट्रक्चर स्टार्ट करूंगा, डाटा स्ट्रक्चर का हाँ, एल्गोरिथम। डेटा स्ट्रक्चर एल्गोरिथम को इकट्ठा स्टार्ट करके प्रिपेयर करके बता दीजिए, ठीक है, स्नैप हो जाएगा अपना। सर लिनक्स में सर मैंने कभी पढ़ा नहीं है, तो सर बेसिक्स में सर कितना सर आपके पास कुछ? नहीं, बेसिक्स ही कोई भी आप यूट्यूब पे वीडियो देख सकते हैं, बेसिक्स आप 18-20 कमांड रहती है उसकी, बेसिक्स ही वो पता होनी चाहिए आपको, ठीक है। यस सर। ओके। कुछ और? नहीं सर। चलो, बहुत अच्छा गोविंद, काफी इंप्रूवमेंट लग रहा है मेरे को, आ जाएगा धीरे धीरे, डोंट वरी है। ओके सर, थैंक यू। गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। और जब भी स्टक होते हो तो एकदम से आप घबरा जाते हो, ऐसा नहीं करना अपने को, काम रहो, चीजों को रिकॉल करो एंड देन ट्राई टू डिलीवर। फाइन। सर मोड ऑफ कम्युनिकेशन में सर तो नहीं प्रॉब्लम आएगा, इंग्लिश टू हिंदी? नहीं, प्रॉब्लम नहीं है, आपको लगता है प्रॉब्लम है, मुझे तो इतना नहीं लगा, आप खुद से समझ बैठे हो कि प्रॉब्लम है, नहीं है। आप पूरा मुंह ओपन करके बोलो, खुला बोलो, थोड़ा कूल होके बोलो, तो चीजें मैनेज हो जाएगी। फाइन। अभी आपने खुद में ही सोच रखा है कि मुझे इंग्लिश नहीं आती, बट आप तो अच्छा बोल रहे हैं। और नहीं आती तो हिंदी में थोड़ा सा टर्न करके हिंदी में नेक्स्ट स्टार्ट अगेन टू इंग्लिश, वेयर इज द ट्रबल? फाइन। सर वो सर आपने एक क्वेश्चन पूछा था, एक्नॉलेजमेंट में साइज बढ़ जाएगा, तो सर उसका आंसर क्या है सर? वो आपने सही बताया था, इतना इतना नहीं बढ़ता ना, फिर क्या बढ़ गया तो? हाँ सर, अगर बढ़ेगा भी तो सर 1 बाइट का एक्नॉलेजमेंट होता है सर। वही 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 वही, ठीक है। यस सर। चलो, ग्रेट। ओके बच्चे। थैंक यू।